Okay, all of y'all. Sure. We'll revise your DNA replication, what we did last time, and finish that part today. Let's go into this, all of you. So I hope you all remember. Everybody, please focus. The DNA replication takes place inside the nucleus in the phase which is called as the S phase or the synthesis phase of your cell cycle. In this process of DNA replication, one DNA molecule produces exact copies or replicas of itself, which is called as replication of DNA. एक DNA से दो DNA molecule बनते हैं which have the same sequence. Same sequence. If the original sequence was 80 GC, then after breaking, A gets new T, T gets new A. So G will get new C, C will get new G. So both daughter DNAs have the same sequence, GC-GC, AT-AT, etc. In other words, both daughter DNAs are genetically the same. And because both daughter DNAs are having the same sequence, this is called as identical daughter DNA formation. One mother DNA forms two daughter DNAs which are genetically the same. One mother DNA forms two daughter DNAs genetically the same. This is important. That is the reason when one cell, say zygote, becomes two cells, say blastomeres, they will have in them identical daughter DNAs. Proof: if the two blastomeres separate, they will become independent zygotes, which will then become identical twins, giving clear proof that both daughter DNAs are genetically the same. Nucleotide sequence in both of them, base pairs in both of them are the same. 3.3 billion base pairs in both of them are the same. Segments of DNAs are called genes, which means both genes are the same. There are 29,429 genes.
each gene produces one specific characteristic. Say keratin, black color. Then both DNAs have in them nucleotide sequence which produces same black color keratin. Means both babies, if zygote separates two blastomeres, both babies will have same genes for color of hair. Both babies will have black color keratin. Gene number 2 is for, say, I-melanin. I-melanin, protein, protein, protein. Simple, every gene DNA undergoes transcription to form mRNA. mRNA undergoes translation to form protein. When we say a gene forms a characteristic, means a gene forms a protein. So 29,000 odd genes form 29,000 odd different proteins, and each protein produces one body part. Keratin produces hair. I-melanin produces color of eye. Say this sequence is for blue color I-melanin. Then if zygote becomes two independent blastomeres, both blastomeres will have same sequence for eye color melanin. Means both babies will have blue color eyes. Similarly, 29,000 odd genes will produce actin myosin, ausin, insulin, alpha ketoglutarate dehydrogenase, enzymes or proteins, hormones or proteins, structures of the human body. Every organ of the human body is a protein. Means as simple as that. One zygote formed from father's sperm and mother's egg in fallopian tube by fertilization undergoes cell division to form morula, blastula, gastrula, within gastrula, ectoderm, mesoderm, endoderm. Ectoderm, mesoderm, endoderm have in them same DNA, because we just proved DNA, when one mother DNA forms two daughter DNAs, genes in them are the same. In ectoderm, a specific gene, say gene number 2348, is the gene for melanin. Sorry, easier, keratin. And only in ectoderm cells that gene will undergo transcription translation to form keratin, only in ectoderm cells. Hence, we have done it. Fate of 3 germinal layer. Ectoderm se banta hai hair. Similarly, mesoderm has same DNA, but not gene number 2369 for keratin. वो तो ectoderm में transcription translation करता है.
Mesoderm में gene number 21,698 undergoes transcription translation to form ossin, which forms bones, or some other gene, chondrin, to form cartilages, or some other gene to form actin myosin. And in other words, within mesoderm, not ectodermal genes, but some different mesodermal genes formed by transcription translation, ossin bone, chondrin cartilage, actin myosin muscle, and hence fate of three germinal layer. Mesoderm forms bones of the body, muscles of the body, cartilages of the body. Similarly, endoderm forms insulin. Hence, endoderm produces beta cells of islets of Langerhans of pancreas, which have in them gene number 7,698 undergoing transcription translation to form insulin. In other words, endoderm with a specific gene forms a specific beta type cell which produces specific protein insulin. Thus, beautifully, from one single cell zygote, morula, blastula, gastrula, ecto, meso, endo, same DNA, but different genes, different transcriptions, translations, different proteins, different organs. And yes, now we have understood how a zygote within gestation period of 9 months and 10 days develops into a perfectly, beautifully organized baby. Brilliant. The question is, this gene forms keratin. We agreed in principle. This gene forms insulin. This gene forms melanin or ossin. Then we have understood ectoderm से ये जीन से केराटिन बनेगा, एंडोडर्म से ये जीन से इंसुलिन बनेगा, mesoderm से ये जीन से ossin bones बनेंगे. The question is, how are these genes different from each other? Sugars are same, phosphates are same, nitrogen bases are also same, adenine, guanine, thymine, cytosine. The only difference between two genes is the sequence of nucleotide pairs. Gene for keratin, TATA, ATAT, CGCG, TATA, etc. for 3,000 to 2.4 million nucleotide base pairs form a gene. Remember this NCERT when we do Human Genome Project. 2.4 million base pairs form gene for dystrophy, which causes something called muscular dystrophy, which actually is a bad gene. इससे muscles degenerate होते हैं.
एंड नीट में ये बहुत बार आया है, this gene is the longest gene in the human DNA. Average 3000 base pairs, keratin, osin, chondrin, etc. That we will study after 2 lectures. After 4 lectures, we will study 2.4 million base pairs form dystrophy gene for muscular dystrophy. ये जरूर याद रखना, बहुत बार नीट में आया है. Which is the largest gene in the human DNA? Gene for dystrophy. What does it cause? A genetic disease called muscular dystrophy. How many base pairs in it? 2.4 million base pairs. Now it becomes more logical, and the theme, why does this DNA replicate? So why should it replicate? So that from that zygote, different cells are formed. Within different cells, the 2 daughter DNAs have to be same, so that specific genes will form specific proteins, specific parts of the human body. Logic. Process, we know it. DNA replication, quick fire, you'll know it, does not begin at one end and finish at the other end with 3.3 billion base pairs. Too much time. DNA replicates 3 hours, S phase. Hence, multiple points DNA breaks. Multiple points called ori, origin of replication. Enzyme endonuclease breaks the DNA into small fragments. Fragments are broken at ori by endonuclease. In each fragment, helicase enzyme breaks hydrogen bonds. Helicase, yesterday's DCT, has dual functions. It breaks the hydrogen bonds and thus causes the 2 DNAs to unwind and form a replication fork. Thus, hydrogen bonds are broken by helicase and unwinding is done by helicase. Hydrogen bond breaking, first function. DNA unwinding of the helix, second function. So helicase has dual function. Ojasvi, clear beta? Good. Now, then synthesis of new strands. Before the entire process begins, cell, nucleus, 2 thin DNAs, 1 maternal, 1 paternal, from sperm, from egg, formed zygote. Zygote divides by mitosis to form morula, plastrula, gastrula, baby.
every cell has maternal DNA, paternal DNA. Important for today's lecture, two DNAs. Very soon coming up, two DNAs in every cell by mitosis. Lovely concept, very soon. Hence, the first zygote had got one haploid maternal DNA and one haploid paternal DNA. Hence, gametes, because of only one DNA, were haploid. But zygotes and every subsequent cell of the human body, which multiply by mitosis, are with two DNAs diploid. Crucial concept. Of course, you all know, but again, I have revised it. Will help you in the many future chapters ahead. Why do we say gametes are haploid? They have only one DNA. Why do we say somatic cells are diploid? Because they have two DNAs, one paternal and one maternal. From the first egg and the first sperm fusion of the first cell zygote. Now, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, उसके अंदर मैटरनल पैटर्नल डीएनए थे. मैटरनल डीएनए is 3.3 billion base pairs, same as paternal DNA. So 3.3 plus 3.3 is a total of 6.6 billion base pairs. Each DNA spirally coiled, having a diameter of only 2 nanometers. Length, huge. Very soon we'll calculate that. Thickness, only 20 angstrom units. In other words, 2 nanometers. Angstrom, of course, you all know, 10 raised to power of minus 10. Nanometer, of course, you all know, 10 raised to minus 9 meters. In other words, 20 angstroms, diameter of DNA. In other words, 2 nanometers, diameter of DNA. Very long, but very thin. Hence, the DNA is not the major resident of the nucleus. वो तो बहुत छोटा space occupy करता है, बहुत पतला है. The majority of the nucleus is full of, we remember, deoxyribonucleosides. Adenine plus deoxyribose sugar, deoxyadenosine, because it has deoxyribose sugar, C5H10O4. Unlike ATP, which has adenosine triphosphate, which is adenosine, means it has C5H10O5 with OH at the second carbon. तो हुआ
C5H10O5 राइबोस शुगर, बट अगर OH की जगह H है, and you'll know it, but ये इतना important है ना कि I'm just revising it for you. इस second carbon पे OH की जगह H है, then it is C5H10O4, so it is deoxyribose sugar. Adenine, deoxyribose sugar, deoxyadenosine. Attached to it, one phosphate. So it is deoxyadenosine monophosphate. DAMP. Similarly, DGMP. Loaded in the nucleoplasm. Before DNA replication begins, an enzyme, phosphorylase, acts on energy currency ATP, abundant in the nucleus. Phosphorylase breaks ATP into AMP, yesterday's DCT, by breaking the bond between first and second phosphate. So ATP becomes AMP. Then phosphorylase transfers the two phosphates with high energy bond. With high energy bond, two phosphates transferred to DAMP, and DAMP with, we remember, deoxyribose sugar, not with OH, but with H, had one phosphate, DAMP, and phosphorylase transfers from ATP those two phosphates with a lot of energy to DAMP, and at its first phosphate attaches those two other phosphates with high energy. Thus, yesterday's DCT, DAMP plus DATP, phosphorylase breaks two phosphates from it with high energy bond, transfers it to DAMP, and DAMP with two phosphates becomes DATP. Mono पे दो आ गए तो try, and importantly, not just try but activated try, high energy in them, and of course ATP by losing the two phosphates becomes AMP. All the nucleotides are activated before DNA replication. Now, once the replication fork is made, the enzyme called DNA polymerase will start supplying
complementary nucleotides to the old strands. Old strand called template, also called mold, also called mother strand. Mother strand, old strand. DNA polymerase starts supplying activated complementary nucleotides to the mother old strand. Thus, old, new, old, new, helicase, further breaking of hydrogen bonds by helicase, further uncoiling. DNA polymerase supplies new nucleotides as more hydrogen bonds break by helicase. Double strand now becomes single strands. DNA polymerase continues supplying of new nucleotides, which is now called polymerization, forms new strand. Whenever you form anything new, DNA, RNA, amino acid chain, protein, glucose chains connected by glycosidic bonds, converting monosaccharides to disaccharides to polysaccharides. Anything when it goes from mono to poly by forming chains with either peptide bonds, phosphodiester bonds, glycosidic bonds, whichever. But whenever it forms chains, then that phenomenon is forming from mono to poly. So anything which is poly is made by polymerase enzyme. तो सिंपल बात हुई ना, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो आएगा एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। तो कितना इजी हो गया, जब डीएनए से होगा ट्रांसक्रिप्शन, you know the word, and during transcription is formed mRNA, तो उसमें भी पॉली चेन बन रही है ना mRNA की, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, पॉलीमरेज। हाँ, डीएनए के लिए था डीएनए पॉलीमरेज, सो आरएनए के लिए होगा आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सिमिलरली ट्रांसलेशन में प्रोटीन्स बनेंगे, अमाइनो एसिड चेन्स बनेंगे, सो दैट इज अमाइनो polymerase or any chain formation polymerase. चलो ये भी सीख लिया हमने। Which enzyme helps in DNA replication? DNA polymerase. NEET 2019. Which enzyme helps in transcription?
In other words, formation of an mRNA on DNA. We know it now. RNA polymerase. Which enzyme helps in translation? In other words, protein formation. Amino polymerase. So simple. Logic. As DNA polymerase continues to supply new nucleotides, it will form old strands and new strand. Hence, both daughter DNAs will form one old, one new, one old, one new. Hence, we are conserving half of the mother DNA. Hence, the process is rightly called as semi-conservative replication of DNA. Easy, but with one problem. DNA polymerase can supply new nucleotides only in one direction, from C5 end to C3 end, to form the new strand. So, new strand is always formed from C5 end to C3 end. Always. So, the strand which has got 3 to 5 polarity, ascending strand, will have very easy daughter DNA formation. Ascending strand, template. In other words, old strand, which is having 3 to 5 polarity. उसको पढ़ के, उसका एनालिसिस करके, DNA polymerase will supply new complementary nucleotides easily from 5 to 3 direction. अभी हमने बताया कि DNA polymerase हमेशा जाता है DNA polymerase हमेशा जाता है from the DNA polymerase हमेशा जाता है from the C5 end to C3 end. Thus, the new strand is always from C5 end to C3 end. अच्छा, अगर नया स्ट्रैंड C5 to C3 बन रहा है, तो टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होगी? Has to be 3 to 5, क्योंकि जब ये दोनों एक डीएनए बन जाएंगे, old and new, then we remember they have to be anti-parallel. कल का डीसीटी में आया था, they have to be anti-parallel, यानी
अगर एक है 3 to 5 अपवर्ड, तो दूसरा होगा 5 to 3 upward. In other words, 3 to 5 downward. तो एक स्ट्रैंड 3 to 5 ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये तो रूल है। दोनों डीएनएस हमेशा एंटी पैरेलल ही हो सकते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा। करेंगे वो। फिलहाल अगर एक 3 to 5 है तो दूसरे को 5 to 3 बनना ही पड़ेगा। और रूल तो हमें आ गया कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 से 3 में ही जाता है। तो एक स्ट्रैंड का प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका समझो ओल्ड स्ट्रैंड है 3 से 5, तो डीएनए पॉलीमरेज आराम से बनाएगा नया स्ट्रैंड 5 से 3, जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि मैं तो 5 से 3 ही काम करूंगा। ठीक है, यहां आराम से नया स्ट्रैंड बन जाएगा। लेकिन परंतु प्रॉब्लम ये है कि दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है इजी, प्रॉब्लम दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो तो एंटी पैरेलल था ना। अगर एक ओल्ड था 3 to 5, तो दूसरा ओल्ड हैज टू बी 5 डाउन एंड 3 अप। If old is 3 up 5 down, sorry, 3 down 5 up, then the other strand has to be 5 down 3 up, 3 5 5 3। ओके, वो दोनों एंटी पैरेलल है, तो जब वो सेपरेट होगी हेलिकेज से, डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा, तो 3 to 5 वाले में 5 to 3 तो आराम से बन जाएगा, लेकिन 5 to 3 वाले में 3 to 5 तो नहीं बन सकता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का रूल है कि मैं तो सिर्फ 5 से 3 में जाऊंगा, मैं 3 से 5 की तरफ नहीं जाऊंगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। पूरा लेक्चर हो जाने के बाद जिसको सुनना है वो सुन सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 से 5 क्यों नहीं जा सकता है, क्यों नहीं, वो आपको नहीं है सिलेबस में, तो वो मैं बाद में बोलूंगा। बट फिलहाल डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 में जा सकता है, 3 से 5 में नहीं जा सकता है। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, डीएनए पॉलीमरेज कभी भी एक सिंगल स्ट्रैंड पे पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता है।
क्यों नहीं कर सकता है, सिलेबस में नहीं है, तो वो हम लोग लेक्चर के बाद बात करेंगे। बट फॉर द मोमेंट, डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्ट्रैंड में पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता है। तो अब दो प्रॉब्लम हुए, मैं 3 से 5 नहीं जाऊंगा और मैं सिंगल स्ट्रैंडेड पे पॉलीमराइजेशन नहीं करूंगा। तो ये प्रोसेस बढ़ेगा कैसे? सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड पे नहीं कर सकता है तो क्या होगा। ऑफ कोर्स आप सबको मालूम है कि उस सिंगल स्टैंडर्ड पे एक एंजाइम आता है और वो एंजाइम होता है, वी रिमेंबर, हेलिकेज ने बॉन्ड तोड़े, जस्ट रिकैप, और ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया रिकैप, और ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया रिकैप, और यहां पर अब आता है दैट एंजाइम कॉल्ड एज प्राइमेज। तो दोनों स्ट्रैंड पे प्राइमेज आ जाता है। ये था हेलिकेज फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, और अब आ जाता है प्राइमेज दोनों सिंगल स्ट्रैंड पे। और प्राइमेज क्या करता है? प्राइमेज यहां अटैच होके बुलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में से आरएनए बेसिस को, आरएनए बेसिस को, आरएनए को, और आरएनए बेसिस आते जाएंगे। और यहां पर डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, यहां पर आरएनए बेसिस आते जाएंगे। तो ग्यूवेनाइन को मिला साइटोसिन, साइटोसिन को मिला ग्यूवेनाइन, थाइमीन को मिला एडेनाइन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन एडेनाइन को मिला यूरासिल, क्योंकि ये आरएनए बन रहा है। आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, उसमें यूरासिल होता है। तो प्लीज प्लीज रिमेंबर, ये नीट में बहुत बार आता है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ऑल्सो, and very importantly during RNA formation of transcription also, what is the difference? The difference is that for adenine in DNA is attracted thymines, but during primase action, during primase action of DNA replication and during transcription process where mRNA is formed, adenine attracts not thymine, it attracts uracil. ठीक है, तो बेस पेयरिंग हो गए, एंड यहां जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना, अब उसके ऊपर आरएनए बेसेस आ गए ना प्राइमेज की मदद से। तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। ग्यूवेनाइन साइटोसिन जो आया, 3 बॉन्ड, साइटोसिन के लिए ग्यूवेनाइन जो आया 3 बॉन्ड, थाइमीन के लिए एडेनाइन जो आया 2 बॉन्ड, एडेनाइन के लिए 2 यूरासिल जो आए, सॉरी यूरासिल जो आया 2 बॉन्ड, बॉन्ड 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 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते गए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया डबल स्ट्रैंडेड। और उस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को कहते हैं, वी ऑल नो, आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल। तो प्राइमेज
मीन्स की मदद से बन गया आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल. Lovely. Single stranded became double stranded. अब डीएनए पॉलीमरेज का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मैं अब सिंगल स्ट्रैंडेड पे तो नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो डबल स्ट्रैंडेड है ना, अब तो मैं पॉलीमराइजेशन कर सकता हूं. तो अब golden words, please remember, very commonly asked in NEET. RNA primer molecule helps DNA polymerase to now attract DNA bases. Primase attracted RNA bases. एडेनाइन के लिए यूरासिल आया था, लेकिन अब जब आरएनए प्राइमर बन गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया, डीएनए पॉलीमरेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो अब प्राइमर अट्रैक्ट कराएगा डीएनए पॉलीमरेज की मदद से डीएनए एक्टिवेटेड बेसिस. याद है ना, मोनो नहीं है, ट्राई है. डी एटीपी था, फॉस्फोराइलेज की मदद से एक्टिवेटेड थे, वो आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज की मदद से. और ये यूएनआइन को अटैच होता है साइटोसिन को, थाइमिन को, और एडेनाइन को वो याद है ना, प्राइमर में क्योंकि वो प्राइमर आरएनए है, तो प्राइमेज, गोल्डन वर्ड्स, प्राइमेज आर्डिनाइन को यूरासिल पहुंचाता है. बट डीएनए पॉलीमरेज एडेनाइन को थाइमीन पहुंचाता है. और अब ये अट्रैक्शन तो हो गया, ट्राइफॉस्फेट में से ग्यूवेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट में से दो फॉस्फेट वही एंजाइम फॉस्फोराइलेज दो फॉस्फेट्स को उड़ा देता है, निकाल देता है। फॉस्फेट चले तो जाते हैं बट विदाउट एनर्जी, और उनके बीच में जो हाई एनर्जी बॉन्ड था ना 7.3 और 7.3 किलो कैलोरी वाला, वो यहां अटैच हो जाते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ। उसके फिफ्थ कार्बन पे तो खुद का ट्राइफॉस्फेट था और फॉस्फोराइलेज इस न्यूक्लियोटाइड के दो फॉस्फेट निकाल देता है। फॉस्फेट चले जाते हैं फॉस्फोराइलेज की मदद से, लेकिन जो हाई एनर्जी बॉन्ड था वो यूज होता है इस फॉस्फेट का hydroxyl of phosphate, hydroxyl of phosphate and hydroxyl of third carbon. फॉस्फेट का एक हाइड्रोक्सिल और बाजू वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन ऑफ शुगर के ऊपर जो था OH, तो बाजू वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का OH और उसके पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के
फॉस्फेट का OH, कार्बन का OH of next nucleotide and phosphate का OH of the पहले वाला न्यूक्लियोटाइड, उनके बीच में phosphorylase and dehydrogenase OH और H को कंबाइन करके बना देता है पानी, और यहां के ऑक्सीजन, सॉरी, यहां के फॉस्फेट, क्योंकि उसका OH तो पानी बनाने के काम चला गया, तो यहां का फॉस्फेट जिसका हाइड्रोक्सिल OH हाइड्रोक्सिल निकल गया, और बाजू वाले शुगर के थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल का H उस OH के साथ कंबाइन होके पानी बन के निकल गया। तो सबको तो आता है, अब उस फॉस्फेट और उस कार्बन के बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड। तो क्या कहते हैं उस बॉन्ड को? एस्टर। और ये फॉस्फेट खुद के शुगर के, आई होप यू रिमेंबर, ये फॉस्फेट खुद के शुगर के फिफ्थ कार्बन को अटैच था ना, नाइट्रोजन बेस शुगर and sugar के, I'll make it easy, sorry, okay, wrong here, I'll recorrect. Nitrogen base adenine co-attached C5H10O4 deoxyribose sugar के फिफ्थ कार्बन का एक फॉस्फेट अटैचमेंट होता है, उसको भी कहते हैं ईस्टर। नाइट्रोजन शुगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, शुगर विथ फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड, और इसी फॉस्फेट का बाजू वाले शुगर के थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्सिल का मर्जिंग, मिलन होता है, और उससे पानी बनता है, और फॉस्फेट का थर्ड कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाता है, उसको ईस्टर कहते हैं। तो फिफ्थ कार्बन ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड ईस्टर, third carbon of sugar of next nucleotide ester, 5 ester, 3 ester, rightly called 3,5 phosphodiester. उस डाइस्टर को बनाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, 14.6 किलो कैलोरी की एनर्जी लगती है बाबा, इसलिए पहले से तैयारी हो गई थी
डीएनए रेप्लिकेशन से पहले ही कि हर एक डीएएमपी को फॉस्फोराइलेज की मदद से सबको एक्टिवेट करके बाद में चालू हुआ डीएनए रेप्लिकेशन। बाद में फिर वो एंडोन्यूक्लियस, हेलिकेज और सबने मेहनत की। पहले फॉस्फोराइलेज ने तैयारी कर ली थी और अब बनने लगते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो डीएटीपी में से 2 फॉस्फेट तो निकल गए और उसकी एनर्जी फॉस्फोडाइस्टर बनाने काम आई। तो अब ट्राइफॉस्फेट वापस से क्या बन जाएगा? मोनोफॉस्फेट। Yes or no, all of you? Yes, sir. Yes. Everybody? I want you all to remember logistics. Because once you understand logistics, ना, ये आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड तक याद रहेगा. Let it take time, but we will go in depth and understand logistics. पोर्शन तुम्हारा हो जाने वाला है सितंबर एंड के पहले. डोंट वरी. एवरीबॉडी क्लियर? नाउ एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. प्राइमर्स की मदद से डीएनए पॉलीमरेज नया नया न्यूक्लियोटाइड बनाने लगता है. एक मिनट, कौन से डायरेक्शन में बनेगा रे बाबा न्यूक्लियोटाइड? 5 prime to 3 prime. हमेशा फ्रॉम 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम. वो तो याद है ना कि नया स्ट्रैंड हमेशा बनेगा 5 से 3, अर्थात टेम्पलेट होगा हमेशा 3 prime to 5. 3 प्राइम टू 5 प्राइम. वापस से थोड़ा इजी करते हैं. आई नो ये थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन नीट में इतनी बार आया ना कि आई वांट यू ऑल टू बी परफेक्ट विद दिस. इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट में. डायग्राम बेस्ड टेम्पलेट 3 से 5, प्राइमर will help नया स्ट्रैंड 5 से 3, टेम्पलेट 3 से 5, डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड 5 से 3 हो गया. डीएनए पॉलीमरेज को मदद मिल गई कि मुझे प्राइमर मिल गया, तो सिंगल स्ट्रैंडेड का जो प्रॉब्लम था वो डबल स्ट्रैंडेड तो हो गया. और अब मैं 5 से 3 में नए नए न्यूक्लियोटाइड ला सकता हूं जो कॉम्प्लीमेंट्री है. और 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट को निकाल के उसकी एनर्जी निकाल के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता हूं. और एक बार जब न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने लगे तो इस चेन को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन हो गया ना. नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए. इन अदर वर्ड्स चेन बन गई. इन अदर वर्ड्स पॉलीमराइजेशन हो गया.
तो बराबर नाम है इसका, इसे राइटली कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। उसने पॉलीमराइजेशन कर लिया। चलो, हो गया, एक स्ट्रैंड का तो काम हो गया। अब दो सवाल जो कल हेत्विक पूछ रहा था, क्या ये प्राइमर ऐसे ही रहेगा? क्या जब डॉटर डीएनए बनेंगे तो डॉटर डीएनए में ये डीएनए होगा और यहां छोटा सा प्राइमर होगा? अरे प्राइमर होगा तो क्या फर्क पड़ता है आपको? प्रॉब्लम है आपको? क्या फर्क पड़ता है प्राइमर रह गया तो? नहीं सर, प्राइमर नहीं रख सकते पीछे, क्योंकि प्राइमर में होता है यूरासिल। यूरासिल। और यूरासिल अगर होगा ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है, तो वी कैनॉट हैव ट्रांसक्रिप्शन, नहीं हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, एमआरएनए नहीं बन सकता है ट्रांसक्रिप्शन से। तो डीएनए के अंदर प्राइमर पीछे नहीं रहने दे सकते हैं, वो टेम्पररी है। उसने सिर्फ हेल्प किया डीएनए पॉलीमरेज को कि ले बाबा, कर तू अभी तेरी शुरुआत, बना नया स्ट्रैंड। लेकिन वो प्राइमर का करेंगे क्या बाबा? क्या उसको निकाल देंगे? अरे उसको निकाल देंगे तो ये तो गैप रह जाएगा। फिर इस गैप को कौन फिल करेंगे? डीएनए लाइगेज। सर लाइगेज ना दो डीएनए के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है। एक डीएनए पॉलीमरेज। DNA polymerase only. हाँ जी, वेरी गुड, वेरी Reading गुड, which it has. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। चलो, तो ये वेरी नाइस, जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन चलो, तो एक प्रॉब्लम रह गया कि प्राइमेस का क्या करेंगे। चलो वो तो दूर की बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि दूसरे स्ट्रैंड का क्या करेंगे। सर दूसरा स्ट्रैंड तो 5 से 3 है और डीएनए पॉलीमरेज 3 से 5 में नया स्ट्रैंड बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसका रूल है, मैं बनाऊंगा हमेशा 5 से 3। मैं 3 से 5 काम ही नहीं कर सकता, है कुछ कारण, वो बाद में करेंगे, लेकिन नहीं कर सकता मैं 3 से 5। तो सर ये दूसरे स्ट्रैंड का करने का क्या? सोचो, लॉजिक। Sides are arranged in fragments. We will divide it in fragments and then the replicate. With a primer. Okay. Somebody? क्या कर सकते हैं? नहीं, पागल को नहीं पूछना मुझे, और कोई बोलो। हाँ साक्षी, ट्राई बेटा। They will be made in small parts as and when the helices. We can't hear. Sir, they will be made in small parts as and when the helices like separates, then some part will be made, then उसके आगे वाला part है. Very good बेटा, very good. And it will be discontinuous. हाँ जी, और ये नीट में इतनी बार आया है और स्टूडेंट को इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता है। तो चल And the small fragments. कंटिन्यू बेटा। Sir, can you repeat what? मतलब क्या डिसकंटिन्यू, यानी कैसे डिसकंटिन्यू होगा? तू वो जो साक्षी बोल रहे हैं, बात तो दोनों की बराबर है, but what do you mean by discontinue? Sir, it means it cannot complete replication in one go. Like we have to
divided into small fragments, and that small fragments will be replicated first, and the fragments will be joined later by DNA ligases. Excellent, beta. Wonderful. Ajay Satvik, you have anything more to add to it? So basically, it breaks into smaller fragments, and then the 5' and 3' fragments of the DNA of that fragments are used. So basically, it goes from 5 to 3, and then goes to next fragment, and then goes from 5 to 3 there, and like so on. Wonderful, wonderful. Sakshi, Hitvik, and Satvik, brilliant, huh? Very nice. हाँ, ये कोई इजी बात नहीं, हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुम लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपको एनसीईआरटी में दिया तो है, पर उसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया है, और इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्या होगा, बहुत ध्यान से। Sir, हाँ अनिका, एक मिनट बेटा। no, I don't have a doubt. I just wanted to say that in the discontinuous one, many RNA primers are formed, and in the continuous Lovely. तुझे तो मैं कैडबरी दे दे के पागल हो जाऊंगा। Superb. I wanted that word. Multiple primers will be required. Beautiful, बेटा. Beautiful. अब ध्यान से देखना, सर। Where? This will help. एक सेकंड जरा. Okay, okay. ध्यान से सुनना बेटा. How do I put it for you all to understand? Achha, sorry, none of the diagrams are explanatory properly. Okay, I will try our own simple diagram. Okay, ध्यान से. ये समझ आया? All of you. If not, please say yes or no. हाँ या ना, ये वाला, ये एक मिनट, हाँ या ना, all of you, 3 to Yes, sir. 5, नहीं समझ में आया? Okay, okay. 3 to 5 old strand template old new नया primer single strand becomes double strand, helps DNA polymerase to supply new nucleotides now, and new nucleotides go from 5 to 3, helps DNA polymerase to do both its problems. Primer सिंगल स्ट्रैंडेड को डबल स्ट्रैंडेड बना देता है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज काम कर सकता है. और टेम्पलेट 3 से 5 है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड 5 से 3 बना देगा. तो 5 से 3 का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और सिंगल स्ट्रैंडेड का डबल स्ट्रैंडेड भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि प्राइमर आ गया.
हाँ या ना, ये तो बोलो पक्का। तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया। अब ये है 5 से 3 डीएनए पॉलीमरेज, यहां तो काम कर सकता है। समझो यहां भी प्राइमर आया, यहां भी प्राइमर आया, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ये बन गया डबल स्टैंडर्ड। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व। प्राइमर को प्रॉब्लम नहीं है बनना, प्राइमेस को इश्यू ही नहीं है, वो तो कैसे भी मदद करेगा प्राइमेस, प्राइमर तो बन जाएगा। बट नाउ उसकी मदद से क्या डीएनए पॉलीमरेज अब नया स्ट्रैंड बना पाएगा? 5 से 3 की तरफ नहीं बना सकता है, क्योंकि सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की तरफ नहीं जा सकता है, वो सिर्फ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। You said ulta. हाँ एग्जैक्टली, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, प्लीज प्लीज लास्ट 1 मिनट, प्लीज लास्ट 1 मिनट, सॉरी। वापस से टेम्पलेट 5 से 3, टेम्पलेट 5 से 3। सो डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड 3 से 5 एंटी पैरेलल बनाना पड़ेगा, लेकिन 3 से 5 नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका मजबूरी है कि मैं सिर्फ 5 से 3 बना सकता हूं, मैं 3 से 5 नहीं बना सकता हूं। अब तक मैंने ये जो समझाया आपको समझ में आया बेटा? Yes. ओके। Yes. तो अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? अनिका, सुपर बेटा, सुपर, Every fragment will have its individual RNA prime. लवली। ध्यान से सुनना, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लॉजिक। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज एक ही स्ट्रैंड में काम करता है, 3 से 5 वाले टेम्पलेट का मदद लेके 5 से 3 में नया स्ट्रैंड बनाने की शुरुआत करता है। बनने लगा 5 से 3, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा यहां नया स्ट्रैंड बनेगा। इन द मीन टाइम दूसरे स्ट्रैंड पे 5 से 3 वाले के ऊपर बनने लगता है प्राइमीज की मदद से प्राइमर। तो सिंगल becomes with primer double. One problem solved. Now DNA polymerase ह्यूज वॉल्यूम में होता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, भर भर के होता है डीएनए पॉलीमरेज। थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज, थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज
यू टर्न लेता है, यू टर्न, और नीचे की तरफ जाना चालू करता है। याद रखियो, यहां डीएनए पॉलीमरेज ऊपर की तरफ गया, कुछ समय बाद थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज यू टर्न लेके दूसरे वाले ओल्ड स्ट्रैंड के आरएनए प्राइमर को चिपक जाता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। हो गया काम। अब डीएनए पॉलीमरेज नीचे जा रहा है, तो बाबा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? 5 से 3, 5 to 3 up. Old means primer, U-turn, नीचे नया स्ट्रैंड बनता है 5 से 3। हो गया काम। 5 से 3 ऊपर, U-turn, 5 से 3 नीचे। हो गया। Yes or no? Everybody? Yes or no, everybody? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Wonderful. This topic is so bloody difficult. It's all about visualization. Huh? And this is anyway easy. आगे तो levels of difficulty are going to be very high. So better start understanding. This is the beginning of degree of difficulty. Picturize. It's all about picturization. Book पढ़ के नहीं समझेगा, पिक्चराइज करते रहना। और ये वाला पार्ट कभी भी नहीं समझ में आया तो ये यूट्यूब भेजने वाला हूं, देख के कंसेप्ट याद रखना, नहीं तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आपका मार्क जाएगा नहीं। हेलिकेज, हेलिकेज कंटिन्यूस ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, 3.3 बिलियन है, ये तो हुए कुछ 2-3 हजार। हेलिकेज कंटिन्यूस ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। 5 to 3 DNA polymerase, 5 to 3 simultaneously helicase continues up, means it is still going 5 to 3, still going 5 to 3,
Still going 5 to 3. And last helicase, last bond broken, DNA polymerase, last few nucleotide, easy. Sorry, I'll make it this way. DP, DNA polymerase. Sorry. Everybody, ये वाला जो नया डीएनए है ना, वो कंटिन्यूअस बनेगा. हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज नए नए न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जाएगा, और हेलिकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, और डीएनए पॉलीमरेज ऊपर जाता जाएगा, नया स्ट्रैंड बन जाएगा. कंटिन्यूअस बना या टुकड़े टुकड़े में बना? कंटिन्यूअस बना. कंटिन्यूअस बना. कंटिन्यूअस बना. यस और नो? यस और नो? Yes. Yes, sir. Hitwig Panchal. The continuous strand is formed on template having which polarity? Three prime to 5 prime. Excellent. Continuous strand is formed on template old strand. Template any old strand. So continuous strand, continuous new strand is formed on template having 5 to 3 polarity. Remember this word when this video comes to you. Neat question. Continuous new strand is formed on template having 5 to 3
3 to 5, ascending strand, all the above. Sure. 5 to 3, 3 to 5, descending strand, all the above. 3 to 5. 3 to 5. 3 to 5. 3 to 5. Isn't it descending strand? It is ascending strand. 3 to 5 ऊपर होता है ना, तो it is ascending strand. So it is not descending strand. It is ascending strand. New strand or continuous strand is formed on template, not 5 to 3 template. खुद का 5 to 3 होगा, यानी टेम्पलेट का तो 3 से 5 होगा, 3 to 5 होगा. और ये क्वेश्चन जब आया था ना, इतने स्टूडेंट्स का ये रॉन्ग गया था. So many of them marked 5 to 3. So many of them thought 5 to 3 भी है, डिसेंडिंग भी है, तो ऐसे माइंड में हो जाता है ऐसा, तो वो वाला मार्क कर दिया. इसलिए कंसेप्ट बुक में दिया नहीं है. ये कौन से स्टैंड में कंटिन्यूस बनेगा? 3 से 5 पोलैरिटी. 3 से 5 पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट. 3 से 5 पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट, असेंडिंग स्ट्रैंड पे नया वाला कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा. older words, 3 to 5 template, ascending template will have new continuous strand. And now what Adhika beautifully said. Sir. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड. प्राइमर, ध्यान से. नीचे प्राइमर, थोड़ा नया स्ट्रैंड बन गया, थोड़ा. डीएनए पॉलीमरेज टर्न सामने वाले स्ट्रैंड पे प्राइमेज की मदद से नया छोटा टेम्पररी आरएनए प्राइमर, और फिर डीएनए पॉलीमरेज will form new strand with the rule कि नया स्ट्रैंड बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में. हमेशा नया स्ट्रैंड 5 to 3 बनता है. कंटिन्यूस भी 5 to 3 बनता है, और यूटर्न के बाद दूसरे स्ट्रैंड पे भी ऊपर की तरफ नहीं परंतु नीचे की तरफ 5 to 3 ही बनता है. अच्छी बात है. फिर ये और टूटता जाएगा. यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस है. फिर वापस से थोड़ा डीएनए पॉलीमरेज यूटर्न लेगा वापस से, और वापस से यहां बनेगा प्राइमेज की मदद से प्राइमर. वापस से डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाएगा नीचे की तरफ 5 से 3. लेकिन 5 से 3 एंड तक नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा तो पहले ही बन चुका था. तो 5 से 3 पहले वाले प्राइमर तक बनाएगा, क्योंकि प्राइमर तक बनेगा, प्राइमर के नीचे वाला तो पहले ही बन चुका है. तो एक फ्रैगमेंट बना, फिर
दूसरा फ्रैगमेंट बना, कंटिन्यूअस नहीं बना, फ्रैगमेंटेड बना। प्राइमर टू प्राइमर, वापिस प्राइमर, यू टर्न, नीचे प्राइमर टू प्राइमर. So now we are understanding what Satvik, Anika, Hetvik, Sakshi were saying. Not continuous, fragment, primer to primer. These were first time discovered by Alan Okazaki. Okazaki, a Japanese scientist, had done this level of research कि ये fragmented बन रहा है. Matter of respect to him, these fragments are called as Okazaki fragments. Golden word, template 3 to 5, ascending, new strand, continuous 5 to 3, template 5 to 3, descending, new strand, primer to primer, not continuous, Okazaki fragment. 3 to 5 template, continuous, one RNA primer only, starting May. Then no primer. 5 to 3 template, descending strand, not continuous, Okazaki fragment, multiple primer, 3 to 5 template, one primer, 5 to 3 template, multiple primer, 3 to 5 continuous new strand, 5 to 3 discontinuous Okazaki fragment, 3 to 5 ascending, one primer, 5 to 3 descending, multiple primers. हाँ या ना, इसके वर्ड्स कॉम्बिनेशन में एक्स वाई जेड ऑल द अबाव, एक्स वाई वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पक्का? ऑल ऑफ यू? ग्रेट. चलो ये भी काम हो गया. अब एनसीईआरटी लेवल का लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. सात्विक जस्ट अ मिनट. अभी जो हमारा एक क्वेश्चन था वो तो सिलेबस लेवल के अंदर,
कि ये यहां प्राइमर बना, फिर यहां तो मल्टीपल प्राइमर बने। अब इन प्राइमर का करेंगे क्या? और बाय द वे, दोनों स्ट्रैंड क्या एक ही स्पीड से बने? The discontinuous one was slower. एक्सेलेंट। न्यू स्ट्रैंड इल्ले nothing. New strand, but simultaneously new strand. Oh, uh, 3,000 new nucleotides, which means it forms 3,000 base pairs. कुछ वर्ड याद आ रहा है? 3,000 बेस पेयर क्या होता है? One gene. Excellent. Beginning of the lecture. 3,000 base pair is approximately 1 gene. So, 1 gene. No gene. One gene in opposite direction. Simultaneously. Second gene. Oh, 1, 0. Simultaneously. Second, first, third, second. Oh, continuous strand is faster and is called, please remember, leading strand. This continuous strand, slower, lagging strand. कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है? कितने सारे? टेम्पलेट 3 to 5, one primer. Template 5 to 3, multiple primer. Three to 5, one primer, continuous new DNA. 5 to 3, descending strand, multiple primer, discontinuous new DNA, Okazaki fragment. 3 to 5 template, 3 to 5 ascending template, single primer, continuous, forms first leading strand. Template 5 to 3, descending strand, multiple primer, Okazaki fragment वाला न्यू स्ट्रैंड बाद में बनता है, स्लोअर लैगिंग स्ट्रैंड. हाँ या ना? All of you, yes or no? Great. Oh, good.
So now we won't need these diagrams because this is not explaining properly. I tried to see many videos, लेकिन किसी में भी इतना बराबर मिला नहीं था. हाँ, थोड़ा ये समझ सकेगा एक दो कि. Let me now help you. I hope you see. Well, this will give you better picturization, of course. थोड़ा और clarity से आएगा, लेकिन सॉरी, सबसे पहले sorry, yeah.
Sir, एक सेकंड सॉरी एक मिनट तू कंफ्यूज कर दिया यार देख होल्ड ऑन सॉरी सात्विक होल्ड ऑन बेटा I'm already exhausted. नहीं समझ में आया तो जरा होल्ड ऑन करके पूछ नहीं सर समझ में आया. One more important word, thank you. Sorry, now.
Every word. I'm sending the video, don't worry. Or you'll see me writing so you can know the new points also. Don't worry. Video mein. Understood? All of you? Excellent. Now, Satvik, hold on, beta. So I'll just finish in my flow, then I'll solve all your doubts. So now, all of y'all, very important. आया ना? Diagrammatic clarity आ रही है? All of you. First primer, first Okazaki. Second primer, second Okazaki. So on and so forth. Yes or no? All of you? Yes, sir. Done. This is very nice. And now the last logic. Again. Who'll answer this now? Yeah, somebody rightly said, तो आपको आता ही है. Now, let me see who will answer this. Sir, अब ये नया स्ट्रैंड बन तो गया, सबको उतना परफेक्ट. आई एम श्योर यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ. हम लोग ने इतना ज्यादा डिटेल में किया है कि आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में. नाउ यू आर टेल मी दिस.
सर ये प्राइमर्स रख तो नहीं सकते, एज वी जस्ट सेड, यूरासिल होता है उसमें, करने का क्या है, इसको निकाल देना पड़ेगा। तो जब ये लीडिंग भी खत्म हो जाता है, पूरा बन जाता है, फिर लैगिंग भी पूरा बन जाता है, तो लीडिंग लैगिंग दोनों बन गए। नाउ व्हाट टू डू ऑफ these primers? Somebody just rightly said these primers are removed by DNA polymerase enzyme. Exonuclease. Enzymes are DNA polymerase enzyme removes the primer. DNA polymerase, जिसे कहते हैं exonuclease, also called exonuclease, also called, जरूर याद रखिएगा, hRNase enzyme। और नाम से तो पता चल रहा है, RNase, lyase, hyaluronase, RNase, ACE, lactic, RNase निकाल देता है RNase और exonuclease उस प्राइमर को। प्राइमर आउट, प्राइमर आउट, देखो हो गया प्राइमर आउट, प्राइमर निकल गया। तो अब तो ये गैप रह गया ना इतना, तो ये गैप फिल कौन करेगा? सेम डीएनए पॉलीमरेज। क्या बात है, डीएनए पॉलीमरेज गैप को भी फिल कर देगा। अब चलो गैप भी फिल हो गए, ये गैप भी फिल हो गया। अब एक प्रॉब्लम है, एक, बाकी सब हो गया है, नियरली ओवर एवरीथिंग, आई नो यू आर टायर्ड। So exonuclease is the dual function of DNA polymerase. Yes, hold on. Huh? So far clear, all of you? So now last lines. Oka, new nucleotides brought by DNA polymerase, gap filled by DNA polymerase, gap filled by DNA polymerase, lovely. तो as such, तो ये ओका गैप as such, तो ये एक स्ट्रैंड तैयारी हो गई है कि पूरा कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाए। तो ये जो गैप्स है ना उनके बीच में ओकास और वो गैप डीएनए, ओका डीएनए गैप डीएनए, ओका डीएनए गैप डीएनए। तो ओका डीएनए, ओकाजाकी डीएनए और गैप डीएनए में एक बॉन्ड बना दिया जाता है, ये बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड। दैट बॉन्ड, please remember, please remember, is made by, that bond is created by DNA ligase enzyme. तो कौन सा एंजाइम सर? DNA ligase joins all the fragments
within the daughter DNA, and ligase makes fragments become continuous. Neat point of view. Which enzyme helps new DNA strand fragments to become continuous? Ligase enzyme. Lovely. इतनी मेहनत हुई, अब ये लैगिंग स्ट्रैंड भी जो डिसकंटिन्यूस था, कितने एंजाइम की मदद हुई ना? आरएनए प्राइमर निकाले डीएनए पॉलीमरेज ने, गैप भर दिए डीएनए पॉलीमरेज ने, ओका फ्रैगमेंट्स और गैप डीएनए को भी जोड़ दिया डीएनए लाइगेज ने, और इतनी मेहनत के बाद finally you are having, please see this beautiful mother DNA helicase leading continuous दूसरा क्या वर्ड था? Toward replication for 5 to 3 new strand, 3 to 5 template strand, 5 to 3 template strand, 5 to 3 but opposite direction Okazaki fragment, primer, a single primer removed by DNA polymerase of leading strand, multiple primers removed by DNA polymerase of lagging strand, gaps filled by removal of primer filled by DNA polymerase, joining of Okazaki DNA and gap DNA done by ligase, and so much effort के बाद one mother DNA has become two daughter DNA, one original, one new continuous, other new Oka, gap, ligase, and finally continuous. इतनी effort हुई, इतनी effort हो गया. अब का लेक्चर हो गया. For those who want to continue for just 2 minutes, others can leave if you're tired, and if you want to study for Sunday test, NCRT points covered. For the ones who want to, I have some questions. Before you all ask me to be in there, I have some questions for you. Sir, ध्यान से, सबसे पहला ये सवाल. Sir, ये DNA polymerase ड्यूअल नहीं, ट्रूअल नहीं, फोरुअल नहीं, फाउल एंजाइम, आई मीन मल्टीपल फंक्शंस है. सबसे पहले वो न्यू स्ट्रैंड बनाता है 5 एंड टू 3 एंड में. मेन काम डीएनए पॉलीमरेज का. दूसरा काम था डीएनए पॉलीमरेज का, आई होप यू रिमेंबर, removal of primer is done. याद है ना? प्राइमर निकाला भी डीएनए पॉलीमरेज ने. तीसरा फंक्शन था fills gaps between Okazaki fragment. In other words, gap DNAs are made by gap DNA. और इतना तो बेचारे ने काम किया. क्या नेचर ने इस बेचारे को मेहनत की तरह, गधे की तरह काम करा था.
14 और एक काम है उसका। कोई सोच के बोल सकता है क्या काम है? पृथ्वी? Fourth is to add nucleotides in the gaps, and the other one is proofreading. Like when it goes back, it Brilliant! सर हित्विक जिंदा है मर गया? मर गया, चलो ठीक है। अच्छा हित्विक गया, ओके। हित्विक जब ये वीडियो सुनेगा, कल तूने पूछा था मुझे, ये अगर मिस्टेक हो गई ना तो मिस्टेक का करने का क्या? समझो ओल्ड एडेनाइन पे नया थाइमिन नहीं आया, बाय मिस्टेक नया ग्यूएनाइन आ गया। हो सकता है ना यार, 3.3 बिलियन बेस पर न्यूक्लियोटाइड्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, होती है यार गलती, डीएनए भी इंसान है बेचारा। तो सर इंसान कहा है तो इंसान ही है ना, तो सर इससे भी गलती हो सकती है ना। तो समझो बाय मिस्टेक अगर एडेनाइन को थाइमिन की जगह ग्यूएनाइन आ गया, फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा यानी क्या सर? म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन। ये एटीजीसी are nothing but segments of DNA and one genus specific sequence of nucleotides. एक भी सीक्वेंस गड़बड़ हुआ ना, that means that gene has undergone a mutation. उसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा और वो जीन बदल जाएगा। और अगर वो जीन बदल गया ना तो खतरनाक बीमारियां हो सकती है। किसी को पता नहीं है ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी में या ह्यूमन फाइलोजेनेटिक्स, अरे ह्यूमन हिस्ट्री में कब, कहां, कैसे किसी एक इंसान के डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक, और उससे वो जीन म्यूटेट हो गया और वो इनहेरिट होता गया एंड टुडे मोर देन 3 million people in India are having that one mistake inherited from generation to generation, which has caused the most sad disease on planet Earth. Diabetes mellitus, which is not the most dangerous, but is the most common metabolic disorder. And similarly, किसी एक एटीजीसी सीक्वेंस का एक गड़बड़ से हो गया, डायबिटीज से ज्यादा कॉमन। अनिका है ना तुझे वो प्रॉब्लम? मुझे भी है। मायोपिया एक न्यूक्लियोटाइड की मिस्टेक से हुआ है वो बेटा, और हम लोग को चश्मा पहनना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। कैन यू इमेजिन दैट? सो मच प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड। 3.3 billion base pair, you can't have one error. And the great DNA polymerase not only does all this hard work, अगर एक सिंगल मिस्टेक भी हुई ना तो वो उस मिस्टेक को भी रेक्टिफाई कर देता है। ए को अगर जी मिल गया तो डीएनए पॉलीमरेज आके उस जी को निकाल देता है और टी को अंदर भर देता है एंड बराबर सीक्वेंस हो जाती है। इन अदर वर्ड, प्रिसाइज बेस पेयरिंग। ब्यूटिफुली सेड बाय रुत्वी। प्रूफ रीडिंग इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। गधो, आपको 1 घंटे में बायो के 90 MCQs सॉल्व करके बराबर से टाइम टू टाइम प्रूफ रीडिंग करके बिना मिस्टेक किए 90 MCQs करने को नहीं आता है।
उसमें सिली मिस्टेक करते हो। आपके डीएनए पॉलीमरेसिस को 3 घंटे के अंदर 3.3 बिलियन बेस पेयर्स का रेप्लिकेशन करके प्राइमर को निकाल के गैप भर के प्रूफ रीडिंग कर देता है विदाउट एनी मिस्टेक। आइडियलाइज्ड डीएनए पॉलीमरेज, व्हाट एन एंजाइम। नाइस, थैंक यू ऋत्वी। मस्ती मस्ती में, लेकिन हमने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट किए हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज अ SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मायोपिया, थैलेसीमिया, phenylketonuria, alkaptonuria, albinism, many thalassemia, sickle cell anemia, बहुत excellent concepts से आगे जाके everything is SNPs, single nucleotide polymorphism. Problem: during DNA replication, some error was made. Proofreading unfortunately नहीं हो पाया, wrong base pairing हो गया, वो एक इंसान से inherit होते 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 पूरे population में spread हो गया, and that metabolic disorder has now become an epidemic, like myopia, like diabetes. I won't say that, it's a pandemic. अभी तो आपको आता है ना, it's not only endemic, it's not only epidemic, it's a pandemic, global disorder, metabolic disorder. SNP, एक nucleotide, one error by DNA polymerase. But can you imagine, nature is so precise, nature is so kind towards all of us. 3.3 billion base pair 3 घंटे में खत्म होता है, और 24 घंटे में वापस से वो 3 घंटे का प्रोसेस स्टार्ट होता है और खत्म होता है, और सेल डिवीजन, सेल साइकिल चलते रहती है लाइफ लॉन्ग। एक सिंगल मिस्टेक इन मोस्ट केसेस होती नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन इज मेटाबॉलिकली द ग्रेटेस्ट थिंग हैपनिंग इन अ सेल, इन अदर वर्ड्स इन लाइफ। नेचर की सबसे ग्रेटेस्ट मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पिविटल, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, फिर सिग्निफिकेंस में आता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। बट जब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा ना, तब तक ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। और डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैस हो जाएगा और आप मेटाबॉलिकली डिजीज हो जाओगे। चलो ग्रेट। तो यार ये डीएनए पॉलीमरेज सब कुछ करेगा। अगर मुझे इतना बता दो ना, अगर डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग कर सकता है, प्रूफ रीडिंग कि ये रहा, जो अभी ऋत्वी ने बताया कि सर ये यहां से किसको, प्राइमर को निकाला, फिर यहां उसने पॉलीमराइजेशन किया। सबसे पहला सवाल कि यहां पॉलीमराइजेशन कर सकता है क्या? इफ रिमेंबर, ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, तो क्या डीएनए पॉलीमरेज ये इधर भर सकता है, गैप भर सकता है? भर सकता है, क्योंकि उसको ये आरएनए नहीं है, प्राइमर नहीं है, डीएनए ही है ना। अरे डीएनए हो या आरएनए हो, है तो डबल स्ट्रैंडेड ना। तो वो डीएनए पॉलीमरेज को नया न्यूक्लियोटाइड यानी गैप फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है, कर लेता है वो, नो इश्यूज। लेकिन सर दूसरा सवाल, क्या एक ही एंजाइम अगर सब कुछ कर रहा है कि नया स्ट्रैंड भी बना रहा है, प्राइमर भी निकाल रहा है, गैप भी भर रहा है, प्रूफ रीडिंग भी कर रहा है, तो सर वो एंजाइम पे कितना लोड है कि 4 काम एक साथ करने हैं? इज इट पॉसिबल लॉजिकली for one enzyme to do so many different types of functions at the same time? No, of course not ना। क्या तुम पेपर के लिख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, खाना बना सकते हो, टीवी देख सकते हो एक टाइम?
ये पागल कर सकता है, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ क्या बोलेगा एलियंस. नहीं हो सकता है. सर, how will this happen? Logic, huh? There are different Serious DNA lines. polymerases. Serious lines. How can this happen? How can DNA polymerase do so many functions? There are different DNA polymerases, right? Brilliant. एक छोटा सा लाइन दिया है मैंने आपको नोट्स में. अब नेक्स्ट लेक्चर आप लोग ये फाइंड आउट करना कि which are those different types of DNA polymerases which do the different functions. आपके MTG में ये क्वेश्चन दिया है एज एन MCQ. हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है. ओके, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, बट MTG में दिया है. तो हम लोग जब करेंगे ना इसका MTG, तो उसके अंदर आएगा which enzyme. Second last MCQ of molecular basis of inheritance in MTG. Who does proofreading in which DNA polymerase does proofreading? ढूंढना है. So exonuclease? Beta, that is just another name given to it. Oh, There is, in a way, I can say DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3, DNA polymerase 4. okay. हाँ, but उनके अलग-अलग नाम क्या है? Just for knowledge, हाँ, ये as I told you, आपका NCERT lecture खत्म हो गया, तो just to stimulate you. Okay? Done. चलो ये एक बात होगी. And हाँ, anything else, बेटा? I can't hear you, beta. Sir, can you hear me now? हाँ बेटा. Sir, in the Okazaki fragments, they would be in the same direction as that of the template, or in the different direction. Like in this diagram, they have shown it is the right. The template is in the right direction, and the Okazaki is in the left direction. So both will be in the right direction. तू यानी ये वाला डायग्राम बोल रहा है? हाँ, ये वाला? नहीं, इसको भूल जा. मैंने जो ड्रॉ किया था तुझे समझ में आया? हाँ, मतलब दोनों राइट में ही होंगे ना, ऐसे पूछ रहा हूँ. हाँ, correct. Okay, so I have not got good. I tried a lot. I've not got good pictures. But sir, it explained a lot. हाँ, तो अच्छा है. हाँ, ये डायग्राम से भी समझ में आया ना? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा कलरफुल है. मैंने जो किया था वो पेन है ना बेटा. हाँ. बट उसमें डायरेक्शन समझ में आ गया. इसमें पिक्चराइजेशन हो गया. And sir, the DNA polymerase in the opposite direction to the template. Perfect. Okay, sir. Yeah. Perfect. Thank you, sir. Good. Yes, beta. हाँ, Rutvik. So how does the DNA polymerase molecule know that there's an error in the nucleotide in the pairing? ठीक है, मैं तुझे एक दिन सिखाऊंगा. अभी तू संडे के लिए पढ़. मैं भी बहुत थक गया हूँ. वो इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है ना. It's like mind-boggling. Amazing it is. सबसे पहले चल, मैं तुझे ऐसे ही नहीं सिखाऊंगा. पहले तू इतना फाइंड आउट कर. What is the name of that DNA polymerase which will do proofreading? Maybe, I guess. 1, 2, 3, 4, or in other words, what name? Sir, isn't it 1 and 2? मैंने कहा, कहाँ से मालूम पड़ा तुझे? Sir, last time you had said that DNA polymerase 3 removes the RNA primer. So then I read that 1 and 2 do proofreading. Fantastic, yaar. Excellent. Wonderful. Nice. Good. चलो. और वो है ना बेटा, वो उसका एक्चुअल नाम नहीं है. तो उसका एक्चुअल नाम क्या है ना, वो ढूंढना नेक्स्ट लेक्चर के लिए. हाँ, वेरी गुड बेटा. Excellent. ये सात्विक. Sir, it was written alpha and beta and all that. क्या बात, तू कहाँ पढ़े? ये तो मैंने दिया नहीं नोट्स में. No, sir, I was looking up that RNA primer removal. So I found that 1 and 2 and 3 are called alpha, beta, delta. Fantastic. Excellent. ठीक है बेटा. I'll someday ऐसे ही जब सबका लेक्चर हो गया रहेगा और आप लोग को भी कोई टेस्ट नहीं होगी, वो टाइम पे हम लोग प्रूफ रीडिंग कैसे होता है ना, वो डिस्कस करेंगे. ओके इनका यार रुचि. ओके. हाँ सात्विक. Sir, I don't have any doubt. I just want to request you in the nicest way possible. Sir, can we keep your lectures on Monday so that on Friday we get adequate amount of time for studying for Sunday test? Oh, Monday. Yeah. Today's lecture. I mean I understood. तेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, because अगर अपना लेक्चर लंबा होता है बेटा, तो every half an hour is precious for you.
Yeah. On Friday, every half an hour is precious. I completely Correct. understand. Like Tuesday, And we I can had manage. promised myself today that I will finish your lecture on time, but again I couldn't. Sorry, ये मेरी flaw है. No, sir, it's not like it's not a problem. I mean, हाँ it's, बेटा. and we are interested, like really. That's why we are waiting back. मेरा क्या प्रॉब्लम है मालूम है? अगर मैं एनसीईआरटी वाला सिखा देता हूँ ना सिर्फ, तो मुझे अंदर लेक्चर के बाद लगता है यार मैंने कुछ जस्टिस नहीं किया है. यही सिखाना था तो बच्चा अपने आप ही एनसीईआरटी पढ़ लेता था ना. Why the hell should he join me? Why should I be his teacher? I don't deserve to be his teacher. I mean, it's stupid, I know, but I want to make you, and I'll tell you दूसरा मस्ती भी नहीं, on serious lines. You all may feel, for student, I would like even erratic student to understand that though we are stepping out of NCERT, when you know a concept in tremendous detail, then basics to become like a reflex action. Now that we learned so much in detail, so much, and remembering those simple things like the leading strand kahan hota hai, lagging kahan hota hai, in neat paper, what do they ask? That fragments are called as, and they've given some fragment, some Okazaki fragment. और कितने स्टूडेंट्स को वो भी याद नहीं रहता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ रट्टा मारा. And now that we have gone into the details, Okazaki Right. ऐसे होता है, Okazaki We actually enjoy your lectures, but just the time. I completely understand that you are time bound. So fine, it's a proper suggestion. I will see to it. I'll try my best that I'll keep it in the beginning of the week. Done. Noticed and appreciated. Done, better. Fair. Sir, also not Wednesday because we'll be having that NCERT test. So just on Wednesdays. Okay, that I can't promise you because we have lots of logistics. We have Villepalli lecture, Borivali lecture, Bologna lecture, and we have to coordinate it with the other physics and chemistry lectures. So, beta, उसमें बहुत multiple parameters होते हैं. As per your convenience, I just wanted to bring this suggestion. I got